Trichomanes. Trichomanes is also called bristle fern because of this characteristic bristle-like structure in the receptacle that contains the sporangia. So, this is a characteristic feature. This bristle-like receptacle is a characteristic feature of Trichomanes. And Trichomanes or bristle fern is a fern that has got a very limited range of habitat because of its very thin nature of leaves. This Trichomanes is limited to only very moist habitat. Though all the fern they prefer shady and moist habitat, but this fern is exclusively found in area that is constantly wetted, that is near the waterfalls or the stream that are constantly wetted, or uh, the wet floor of a dripping cave and all this. So this has got a very limited range so far the habitat is concerned, as a result of which this genus, that is Trichomanes, has got many species which are locally endangered. For example, Trichomanes speciosum and Trichomanes paucisaurus. ये दो species ऐसे हैं जो कि endangered है either in the European countries, UK, France, and all. They have been considered endangered because, of course, due to habitat loss. जो कोई भी species जिसकी ecological range बहुत कम होती है, तो that species is usually getting endangered because of habitat loss. So this species of Trichomanes, this genus of Trichomanes, I have been making a video, an overview earlier in the part one of the video. I've made a overview where I discussed the taxonomic position and its importance, and इसकी growth habit, इसकी habitat, और इसकी global distribution, morphology, बाहर से कैसे दिखता है, anatomy, how इसकी transverse section में कैसे दिखती है, और fossil records and its conservational status as well as its economic ecological importance. Hello friends, I am Dr. Ayantika Das, and in this video I'm going to discuss about the reproduction and life cycle of Trichomanes. The part 1 of the video, that is earlier part, I have put in the description box link. I have put in the description box along with all the pteridophyte videos that I have made, and it is just a playlist, and you can click to that playlist and get all my videos of the pteridophyte. Also, do I have made videos on other topic also? You can go to my channel and watch those botany related videos. So let's begin the video without any delay about reproduction and life cycle. So iski jo we start our life cycle or reproduction with the sporophyte, the sporophyte. क्योंकि हमें जो दिखता है, जो फर्न बॉडी है ये वाली, ये एक्चुअली स्पोरोफाइट है। मतलब ये जो लाइफ फॉर्म है, ये क्या तैयार करता है, स्पोर। नाउ ये जो स्पोर तैयार करता है, तो दैट स्पोर इज हैप्लॉइड इन नेचर। दिस प्लांट, द स्पोरोफाइटिक प्लांट इज डिप्लॉयड इन नेचर। इट प्रोड्यूसेस ए हैप्लॉइड स्पोर, और वो स्पोर क्या तैयार करता है, फिलामेंटोअस गैमेटोफाइट। This is the gametophyte, and this is also haploid, and this gametophyte produces what, the sex organ, sex organs, जो कि प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स, जो कि फर्टिलाइज करते हैं एंड अगेन produces a sporophyte. So this way it goes on. So अब ये जो स्पोरोफाइट है, ये जो स्पोरोफाइट है, ये वाली, ये तैयार करता है जो स्पोर. That spore is actually found at the tip of the
at the apex or the tip of the leaf. जो भी लीफ है इसकी अपेक्स में क्या है? द स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया कैसी है? द स्पोरेंजिया इज इन द फॉर्म ऑफ ए सोरी। सो दिस इज अ लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न, विच मीन्स दैट इसकी जो एपिडर्मल लेयर ऑफ द लीफ है, सो इसकी एपिडर्मल लेयर में एक ही सिंगल सेल से पूरा जो सोरस स्पोरेंजिया ये तैयार होते हैं, एक ही सिंगल सेल से। सिंगल सेल, सिंगल एपिडर्मल सेल, epidermal cell acts as an initial for the sporangial initial. So that is what leptosporangiate ferns are. So ये जो सोरी में हर एक बहुत सारे स्पोरेंजिया रहेंगे, तो एक एक जो स्पोरेंजिया है that has a single initial, that has a single, this type of single initial. So that is leptosporangiate fern. Clear? सो जो अपनी ट्राइकोमैनी स्पीशी है, इसकी जो लीफ के टिप पे जो सोरी रहती है, सोरी मतलब अ कलेक्शन ऑफ मेनी स्पोरेंजिया, सो दैट सोरी इज प्रेजेंट एट द टिप। तो इसकी पोजीशन क्या है? एट द टिप ऑफ द लीफ। एंड टिप ऑफ द लीफ में इट इज प्रोटेक्टेड बाय an इंडूसियम। सो जो सोरस है वो एक ट्यूब्यूलर है। ट्यूब्यूलर सोरस में बहुत सारे एक एक करके स्पोरेंजिया रहती है, और दैट इज प्रोटेक्टेड बाय ए कप शेपेड रिसिप्टाकल, जिसकी टिप में ये ऐसी ये वाली ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर है। सो ये है रिसिप्टाकल, ये जो है ये वाली, ये है रिसिप्टाकल दैट आई एम राइटिंग विथ आर। सो जो सोरस के पोजीशन है एपिकल, और रिसिप्टाकल के अंदर रहती है सोरस, और ये जो रिसिप्टाकल इसमें एक ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर रहती है। सो रिसिप्टाकल इज बेसिकली a cup shaped conical structure that contains the sorus. The sorus is a linear sorus and it is protected by this bristle like structure. फिजिकली इसकी जो हर्बिवोरी से या कुछ ऐसे हर्बिवोरी से अगर मतलब ये अफेक्टेड ना हो, इसीलिए ये ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर। सो दैट ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हर्बिवोरी। और क्योंकि वी हैव टू आल्सो प्रोटेक्ट द सोरस और द स्पोरेंजिया फ्रॉम द डेसिकेशन, तो इसके लिए इंडूसियम भी है। इंडूसियम इज जस्ट अ कवरिंग ऑफ टिश्यू। जो अपनी सोरस है, जो कि रिसिप्टाकल के में सिचुएटेड है, तो इसकी ऊपर एक एक हल्का सा एक सिंगल लेयर की टिश्यू रहती है, दैट इज कॉल्ड द इंडूसियम। ये जो सिंगल लेयर की टिश्यू है दैट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। इट इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम डेसिकेशन। ज्यादा हाई टेम्परेचर हो, मॉइस्चर की कमी हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए ये इंडूशियम प्रोटेक्ट करता है। So we are seeing that at the tip of this leaf, there is a receptacle, and receptacle will contain sori, and that sori will contain many. That receptacle will contain sori, or that will contain many sporangia. और ये जो sporangia है, ये sporangia, it is stalk. This is a sporangia. So this sporangia is contained inside the many such sporangias contained inside the indusia. और कभी कभी ये एक फॉर्म है। दूसरी फॉर्म है कि इसकी रिसिप्टर जो स्टॉक है ये काफी लंबा है। तो क्या होता है कि ये जो इंडोसिया में पहले था, तो यूजुअली इंडोसिया को डेहिस करके इसको इसमें एक डेहिसेंस लाके इसको थोड़ा इट दिस इंडोसिया इट बर्स्ट ओपन, एंड जो स्पोरेंजिया है वो थोड़ा विजिबल हो जाता है। तो देयर इज टू फॉर्म्स। वन इज द शॉर्ट स्टॉक्ड, दिस इज द शॉर्ट, इसकी जो स्टॉक है शॉर्ट स्टॉक्ड,
short stalk sporangia and this is the long stalked sporangia. सो स्पोरेंजिया हम देख रहे हैं दो मॉर्फोलॉजी की, एक की है शॉर्ट स्टॉक और इसकी दूसरी की है लॉन्ग स्टॉक. सो स्पोरेंजिया बेसिकली स्टॉक एंड द स्पोरेंजिया, और जो स्पोरेंजिया है उसमें एक एन्यूलस भी है जो कि थिक एंड वॉल एक लेयर है. जो स्पोरेंजियल वॉल में एक एन्यूलस है जो कि हेल्प इट इन डेहिसंस ऑफ द स्पोरेंजिया. जब स्पोरेंजिया में सारे स्पोर्स जो है, द स्पोरेंजिया वी नो इट कंटेन्स मेनी स्पोर. सो स्पोर जब मैच्योर होता है तो ये एन्यूलस है जो कि एक थिकन्ड लेयर ऑफ सेल्स है इन द वॉल ऑफ द स्पोरेंजिया. एन्यूलस काफी हेल्प करता है इन द डेहिसंस. सो जो मैच्योरेशन होता है एक सोरस के अंदर में बहुत सारे स्पोरेंजिया है. एक सोरस जो है इसकी ट्यूब्यूलर है, हमने देखा है ट्यूब्यूलर है, तो ऑल द स्पोरेंजिया दे आर बोर्न लाइक दिस. सो इनसाइड ए सोरस, ये सोरस है और ये सारे है स्पोरेंजियम. तो इधर में मैच्योरेशन कैसे होता है, द टॉप मोस्ट मतलब ये वाली पहले मैच्योर होगी और एकदम नीचे वाली सबसे आखिर में मैच्योर होगी. तो मैच्योरेशन इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप एंड कंटिन्यूज डाउनवर्ड. मतलब इसकी जो मैच्योरेशन है ये बेसिपेटल मैच्योरेशन है. स्पोरेंजियम की मैच्योरेशन इनसाइड द सोरस इज बेसिपेटल. सो तो हमने देखा क्या, पोजीशन ऑफ द सोरस इन द लीफ और कैसे ये रिसिप्टैकल में है और इसकी जो कवरिंग है इंडूसियम है, और इसमें जो स्पोरेंजिया वो क्या शॉर्ट स्टॉक लॉन्ग स्टॉक्ड है. दो टाइप के स्पोरेंजिया मिल जाते हैं. और जो स्पोरेंजिया है उसकी एक एन्यूलस, ये जो है ये वाली पोर्शन, ये जो हम देख रहे हैं ये वाली, ये है एन्यूलस जो हेल्प करता है डेहिसेंस में. और इसकी मैच्योरेशन कैसी है ना, ऊपर से नीचे. दो सोरस के सारे स्पोरेंजिया है, ऊपर वाले स्पोरेंजिया पहले मैच्योर होते हैं एंड द लोअर स्पोरेंजिया आर द लास्ट टू मैच्योर. सो इट इज अ बेसिपेटल टाइप ऑफ मैच्योरेशन. एंड नाउ वी कम टू द स्पोर. तो हमको पता है कि एक जो स्पोरेंजिया है that produces many small spores. तो बेसिकली जो सोरस है उसके अंदर में बहुत सारे स्पोरेंजिया है. सो बहुत सारे स्पोरेंजिया जो है, एक एक स्पोरेंजिया के अंदर में बहुत सारे स्पोर्स है. So all these haploid spores, how they did look? They look either very globose or they look tetrahedral. But despite the fact कि अगर globose हो कि tetrahedral हो, they have a triradiate ridge. So they have globose or tetrahedral, and one characteristic feature is that they are photosynthetically active. जो इसकी spore है ये at the time of liberation also it photosynthesizes. इसीलिए ये ग्रीन है मतलब इट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव, फोटोसिंथेसिस करता रहता है. तो द स्पोर दे व्हाट दे डू इज दे व्हेन दे जर्मिनेट, इसकी एक थ्रेड लाइक और रिबन लाइक गैमेटोफाइट तैयार करते हैं. तो वंस इन द the sporangia, it dehisces and the spores are liberated. So spore if they fall on the substratum, तो spore कैसे germinate करता है into a tube like ribbon like गैमेटोफाइट. तो इसकी गैमेटोफाइट जो है ये ऐसी रिबन लाइक गैमेटोफाइट है, नॉट दिस हार्ट शेपेड गैमेटोफाइट. ऐसे हार्ट शेपेड जो गैमेटोफाइट है वो इस वाले फॉर्म में नहीं है. ट्राइकोमानीज डज नॉट कंटेन दिस हार्ट शेपेड बट इट कंटेन्स दिस फिलामेंटुअस गैमेटोफाइट. और गैमेटोफाइट जो है ये इट ग्रोज एज अ थिक मैट लाइक स्ट्रक्चर. क्यों?
क्योंकि इसकी जो फिलामेंटुअस गैमेटोफाइट है, ये काफी ब्रांच आउट कर जाता है और एक थिक मैट जैसा फॉर्म करता है ऑन द टॉप ऑफ द सबस्ट्रेटम वेयर इट इज ग्रोइंग. So this is basically the how the spores look and लीफ के ऊपर. तो just इसको देख लेना एक बार. So about the gametophyte. जो gametophyte I already discussed that it looks like this. This is the gametophyte. We see that this is a filamentous structure. जैसे फंजाई होते हैं ना filamentous structure, वैसे ही थोड़ा इसकी जो इस ये वाली फर्न that is trichomanes की gametophyte भी ऐसे होती है. तो gametophyte mainly what is its function is to produce the gametes. So gametophyte के अंदर they have two type of sex organs, that is the antheridia antheridia and the archegonia. So antheridia archegonia, we know it produces this antheridia produces sperm, and the archegonia, that is a female gametophyte, female sex organ, it produces the egg. सो इसमें एग तैयार होती है और इसमें स्पर्म तैयार होते हैं. अब रेस्ट ऑफ दिस लाइफ साइकिल इज जस्ट लाइक द फर्न्स, बट द ओनली कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस gametophyte is that it is not heart shaped but it is filamentous. And this filamentous thing, we see this is the branching point, and we see this is a dichotomy type of branching. एंड इस ब्रांचिंग में ऐसे ये वाली जो पोर्शन दिख रहा है, दैट इज द सेक्स ऑर्गन आर बोन लाइक दिस. एंड ये गैमेटोफाइट जो है, इट इज मच हार्डियर, इट इज मच हार्ड, मतलब टॉलरेंट देन द स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट जो है, जो कि स्पोर प्रोड्यूस करता है, जो कि लीफ एंड स्टेम जिसकी है, मतलब जो डोमिनेंट फेज है, वो सिर्फ और सिर्फ काफी ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में ही ग्रो करता है. बट गैमेटोफाइट इट इज मोर टॉलरेंट. ये काफी डार्क या काफी ड्राई एरिया में भी ग्रो कर लेता है. तो इट इज मच मोर हार्डियर देन द स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट कंपैरिजन में मच हार्डी एंड टॉलरेंट. और ये गैमेटोफाइट की और एक खासियत है कि जो गैमेटोफाइट है, इट कैन ग्रो बाय फ्रैगमेंटेशन. गैमेटोफाइट जो है, इट कैन ग्रो वेजिटेटिवली बाय फ्रैगमेंटेशन. जो गैमेटोफाइट ऐसे गैमेटोफाइट है, तो इसमें फ्रैगमेंटेशन हो जाता है, तो ये वाली एक नया गैमेटोफाइट, ये वाली एक नया गैमेटोफाइट, इट प्रोड्यूसेस ऑल द सेक्स ऑर्गन. दिस portion also produces all the sex organs. So we see that the gametophyte also, they also vegetatively reproduce. So gametophytic generation, it is a very characteristic of trichomanes. दूसरे दूसरे फर्न्स में ये नहीं है, पर इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक है कि गैमेटोफाइट जो है, ये अपार्ट फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट कैन आल्सो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस. तो ये है नॉर्मल लाइफ साइकिल ऑफ एनी फर्न, वेयर the spore, this is the sporophytic plant, so it produces spores. This is the sporangium. ये जो है sporangium है, तो spores are liberated and इस spore तैयार करते हैं any gametophyte. This is the gametophyte. But here in our trichomanes, gametophyte will be certain filamentous thing, जो कि डिवाइड रैपिडली डिवाइड ब्रांच आउट एंड डिवाइड इनटू अ मैट लाइक स्ट्रक्चर. सो ये जो ट्राइकोमेनिस की ये जो गैमेटोफाइट है, it produces all the male and the female reproductive organ. This is the archegonium, this is the antheridium, and ये प्रोड्यूस करता है क्या? मैच्योर sporophyte, just like this one. इधर दिखाया गया है एक हार्ट शेपेड गैमेटोफाइट, पर इधर कैसे हमारे एक्चुअली ट्राइकोमेनिस में होंगी कि दिस मैट लाइक स्ट्रक्चर, इनमें से our gametophyte is giving rise to sporophyte. So but there is a deviation. ये जो अपना अपना ट्राइकोमेनिस है, that will
that will, by fragmentation and gemma formation, it will, what will it do? It will increase the number of gametophyte. It will propagate itself asexually also, and by fragmentation and gemma formation. So इसकी जो हम देख रहे हैं ये characteristic feature है कि the gametophyte it's always producing reproducing by sexual method, as well as asexually also it is getting propagated itself. So this is characteristic feature of Trichomanes, and that is why the gametophytic phase काफी लंबा चलता है. This is quite unusual in the life cycle of Trichomanes. So ये ट्राइकोमेनिस के अलावा भी ऐसे जेमा और फिलामेंटोअस जो इसकी vegetative reproduction of the gametophyte occurs, that is also seen in another fern called Viteria. एंड ये जो विटेरिया है ये एक्चुअली टेरिडेसी फैमिली की है, तो फैमिली अलग सी है, लेकिन ये दोनों विटेरिया और ट्राइकोमेनिस दोनों में ही वी फाइंड ए क्वाइट लॉन्ग लिव्ड गैमेटोफाइट विच इज क्वाइट अनकॉमन इन द फर्न्स. फर्न्स में क्या है, डोमिनेंट फेज इज स्पोरोफाइटिक, बट इधर में ट्राइकोमेनिस it is a characteristic that gametophyte is also long lived. और कभी कभी ऐसा होता है कि condition, if the condition are very favorable, this gametophyte, they do not produce sex organ, they keep on propagating itself again and again by this gemma and fragmentation. They do not usually complete their life cycle. So their life cycle जो है ये कभी कभी इनकम्प्लीट ही रह जाती है, स्पोरोफाइट नया प्रोड्यूस नहीं होती है, एंड दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस जीनस ट्राइकोमेनिस जीनस. सो दैट वाज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन, जिनमें काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसकी गैमेटोफाइटिक अनयूजुअल फीचर, जो कि है कि गैमेटोफाइट काफी लंबे समय से इट कैन बी ऑलमोस्ट perennial, and this is because they are more resistant to the environmental condition than the sporophyte, number one. And number two is that it can reproduce vegetatively, it can propagate vegetatively by fragmentation and gemma formation. So due to these two reasons, we are finding that the gametophyte is growing characteristically long period of time, and sometimes it does not even complete the life cycle. That is, gametophyte, instead of producing gamete and completing life cycle to produce a sporophyte, it starts propagating. मतलब जो gametophyte है ये instead of producing the gametes and fertilize and producing a sporophyte, it takes an alternative path. It, what it does is that it does asexually, ये तो सेक्सुअल पार्ट हो गया ना, सेक्सुअल पार्ट ना करके ये asexually what it does is that fragmentation और जेमा फॉर्मेशन करके ये जो गैमेटोफाइटिक दैट इज एंड जनरेशन ही कंप्लीट करते, हैप्लॉइड जनरेशन में ही रह जाती है, ये डिप्लॉयड वाला जनरेशन में नहीं रहती है. So life cycle is not completed, it goes on propagating asexually. So that was all. And if you have any queries or doubts, or you want me to make any new videos, you can write it in the comment section. I do make videos on any botany related topics, and you can go to my channel and watch those videos put under various playlists. If you like this video, hit the like button, share it with your friends, and please do subscribe, because your subscription, it encourages me to make more such videos. Thanks for watching this video.